Hello students, welcome to MBA Pathshala. So guys, welcome to the Battle of RC. So today guys, we have a very interesting passage from Society and Culture. And I think this is one of those passages that all of you would really enjoy. But before we start with the passage, let's talk about some of the important tips when it comes to solving an RC in CAT. Okay, so this is the genre, Society and Culture. By the way, Society and Culture is one of those genres that has featured in CAT a lot. Natural Sciences, Society and Culture, ये दो ऐसे genres हैं जिसमें से काफी सारे passages आपके आए हैं recently. Okay, and again, this is one genre that most people enjoy reading also. So I think that is what we will be doing today. So let me start with some of the tips how I should go about solving an actual CAT passage. ठीक है, क्या करना चाहिए? So देखो, जब मेरे पास CAT में पैसेज आता है, ठीक है, तो मैं एक मेंटली माइंडसेट बना के रखता हूँ कि इन द एक्चुअल CAT, ऑब्वियसली अभी हो सकता है कि आपको टाइम ज्यादा लग रहा हो, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ यू आर लुकिंग एट अराउंड 10 to 12 minutes per passage. Okay, some of you may even take around 9 to 10 minutes. Okay, so that depends. Okay, but broadly speaking, this is the sort of time frame that most of us are looking at, right? So coming back to the passage, how do I really go about solving an actual CAT passage? ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ कि मैं एक पूरे पैसेज का ओवरव्यू लेता हूँ, trying to get a sense of what this passage is all about. Okay, so I try to read the first few lines of the first paragraph, first few lines of the second paragraph, just trying to get a hang of how this passage looks to me. क्या ये passage मुझे मेरे interest का लग रहा है? ठीक है, is this the sort of passage that I would be doing? Okay, once you identify the genre, once you identify that okay, so this is the feel of the passage, now you can confidently enter into the passage. Some of you may even prefer looking at the question stem. Okay, though that would take you some time, but आपकी choice है. Okay, बट मोर और लेस अगर आपने पैसेज का कंटेंट देख लिया और पैसेज का कंटेंट थोड़ा सूटेबल लग रहा है तो मोस्ट पॉसिबली आप उसको हैंडल कर पाओगे. ओके, सो दैट इज व्हाट यू डू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द पैसेज. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज, keep in mind that mentally you have this frame of around 5 to 6 minutes to read the entire passage. ठीक है, 5 to 6 मिनट्स में क्यों मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर मेरे पैसेज में 5 पैराग्राफ्स हैं तो मेंटली कैलकुलेशन कर लो कि मुझे पर पैराग्राफ अराउंड 1 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि तभी आप 5 to 6 मिनट्स में पूरा पैसेज रीड कर पाओगे, राइट? बिकॉज व्हेन यू से कि यू हैव to do a passage in 10 minutes or 11 minutes or 12 minutes, obviously एक mental calculation background में होता है कि मुझे around 5 to 6 minutes में passage read करना है और around 4 to 5 minutes के अंदर मुझे सारे questions करने हैं, which means per question you have around 1 minute and for the entire passage you have around 5 minutes. Per paragraph you have approximately around 1 minute. Okay, so with that calculation only you can solve a passage in around 10 minutes. और ये 10 minutes का टाइम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, बिकॉज जिस तरीके के पैसेजेस कैट में हमें देखने को मिलते हैं थोड़ा बहुत एक्सीड होता ही है. ठीक है, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड अ पैसेज दैट यू कैन सॉल्व इन अराउंड 8 minutes. ओके, इट्स वेरी रेयर. ओके, एक टाइम था पहले आते थे पैसेजेस, बट अभी जो कैट अपने एक लेवल मेंटेन कर रहा है उसमें यू टेंड टू लाइक स्पेंड अराउंड 10 to 12 minutes आराम से फॉर पर पैसेज ऑन द एक्चुअल कैट आरसी, राइट? ओके, नाउ कमिंग बैक, सो ओवरव्यू हो गया, पैराग्राफ्स मुझे दिख गए, 1 minute पर पैराग्राफ का एक एस्टिमेट आ गया. ठीक है, एज यू रीड द पैराग्राफ समराइज मेंटली ईच पैराग्राफ. ओके, जो भी पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो बैक ऑफ द माइंड आपके एक इमेज बननी चाहिए कि एग्जैक्टली पैराग्राफ बोलना क्या चाह रहा है. नाउ you don't need to remember everything, you just need to remember the crux of the paragraph, the very gist. Okay, so that you can connect it to the gist of the next paragraph and you can form that complete picture. अगर वो mental picture आपके माइंड में नहीं क्रिएट हो पा रही तो आपको बहुत दिक्कत आएगी क्वेश्चंस को करने में. प्लस आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहाँ लोकेटेड है. ठीक है, it's very very important guys to have a good short term memory, and that can only be developed when you cultivate this habit of mentally summarizing every paragraph. ठीक है, एक लाइन में आपके दिमाग में उस पूरे पैराग्राफ का समरी आ जाना चाहिए. ठीक है, so that you can connect it to the next paragraph and so on.
So finally, when you're done with the passage, okay, you have that summary ready to you, ready for you, right? Okay, that's very, very important. Okay, so mentally summarize each paragraph, connect the paragraphs, come up with a version, your own version of the story, what the passage was talking about, and then jump onto the questions. Keep a frame of around 4 to 5 minutes for those 4 questions. That means in the actual CAT, you would be taking around 1 minute per question. ओके मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सीड करता ही है, बट दैट शुड बी द टारगेट, बिकॉज मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि भाई मैं उस 10 मिनट के फ्रेम में पैसेज को कंप्लीट कर पाऊं. थोड़ा बहुत एक्सीड होता है तो वो सबके साथ होता है, पैसेजेस का लेवल भी डिफर करता है, बट दिस इज लाइक व्हाट अ ब्रॉड एस्टिमेट वुड बी, राइट? ओके, सो गाइस, these were some of the steps that you can follow when it comes to solving a CAT RC. Now let's jump on to the actual CAT passage. Very interesting passage, tea as a social drink. Okay, so ये actual CAT का passage है, ठीक है. I hope मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है. So let's look at the passage, guys. So this is the first 2 paragraphs. Okay, then you have the next 3 paragraphs. Okay, as I said, usually 5 paragraphs के around passage होता है, ठीक है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, but this is how most passages look like. And then you have 4 questions in the ending. So guys, these are the first 2 questions, and then you have the next 2 questions. Okay, 4 questions. चलो करते हैं reading start. The sleight of hand that conflate means confuse consumption with virtue, are the central theme in Thirst for Empire, a sweeping and richly detailed history of tea by the historian Erika Rapaport. How did tea evolve from an obscure means unknown, China drink to universal beverage imbued with civilizational properties? So मुद्दा यहाँ पे ये है कि ऐसा क्या हुआ कि जो टी है जिसको कोई नहीं जानता था, एक अननोन चाइना ड्रिंक थी, है ना, ऑब्सक्योर मींस अननोन, वो एक अननोन चाइना ड्रिंक से बन गई एक यूनिवर्सल बेवरेज, पूरी दुनिया में चाय के बारे में लोग जानने लग गए, एंड दैट टू अ ड्रिंक विद सिविलाइजेशनल प्रॉपर्टीज. नाउ this is what the passage is going to be all about. Okay, that how tea transformed itself from an obscure China drink to a drink that has civilizational properties. The passage will also target the aspects as to how we conflate or confuse consumption with virtue. ठीक है, कि कंजम्पशन जो है उसको हम कैसे एसोसिएट कर देते हैं एक गुड डीड के साथ, कि यार ये चीज करना शायद एक अच्छा काम है, ठीक है, इट्स अ वर्च्यू, राइट? Okay, the answer in brief revolves around this conflation not only by profit motivated marketers but by a wide variety of interest groups. देखो, किसी भी चीज को सेल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मोटिव चाहिए. तो ये जो कंफ्यूजन है कि टी को कंज्यूम करना एक वर्च्यू है क्या, ठीक है, I believe like all of you understand what a virtue is. Okay, so you have heard of this phrase virtue and vice. Okay, so vices refer to normally the bad habits and virtue are the good habits. Okay, like the good things. Okay, telling the truth, helping others. Now these are all virtues, right? So ऐसा क्या था कि टी को आपने वर्च्यू के साथ एसोसिएट कर दिया? ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि इसमें प्रॉफिट मोटिवेशन था मार्केटर्स का और बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप से. While abundant historical records have allowed the study of how tea itself moved from east to west, Rapaport is focused on movement of the idea of tea to suit particular purposes. Okay, so इस चीज के बारे में तो काफी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है कि ईस्ट टू वेस्ट टी कैसे माइग्रेट हुई, लेकिन जो हमारा यहाँ पे फोकस है दैट इज हाउ टी मेड इटसेल्फ सूट सम पर्टिकुलर पर्पसेस. ओके, पर्टिकुलर पर्पसेस क्या है वो देखेंगे अभी हम. Beginning in 1700s, the temperance movement advocated for tea as a pleasure that cheered but did not inebriate. Guys, vocabulary. Temperance movement का मतलब एक ऐसा मूवमेंट जहां पे आप लिमिट कर रहे हो ड्रिंकिंग को और वाइसेस को, है ना. टेम्परेंस में जनरली क्या होता है, यू ईट इन लिमिट, यू ड्रिंक इन लिमिट. ओके, सो you want to control your drinking habits. Okay, when I say drinking habit, I refer to liquor. ठीक है. Beginning in 1700, the temperance movement advocated for tea as a pleasure that cheered. टी को पीने से आपको एनर्जी आती है, ठीक है, you cheer, but you do not get inebriated. Inebriated का मतलब intoxication, ठीक है, जो जनरली अल्कोहल में होता है. सो आप इमेजिन कर सकते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें टी नहीं थी, ठीक है, तो ज्यादातर लोग जब सोशली गैदर होते होंगे तो दे वुड ड्रिंक एज इन लिकर, ओके, अल्कोहल. सो it was something that was advocated because
it did not inebriate. Okay, and obviously tea is a stimulating drink, we all realize. And industrialists soon borrowed this moral argument in advancing their case for free trade in tea, guys. बहुत important. इस आर्ग्यूमेंट को इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसलिए पिक कर लिया क्योंकि ये मॉरल आर्ग्यूमेंट था इन द केस ऑफ, इन ऑर्डर टू एडवांस द केस ऑफ फ्री ट्रेड. देखो, जो चीजें समाज के भले में होती हैं उस चीज के लिए गवर्नमेंट जनरली फ्री ट्रेड अलाउ कर देती है. फ्री ट्रेड का मतलब क्या हुआ? फ्री ट्रेड मींस कि इंटर कंट्री अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट इंडिया, इफ वी इंपोर्ट बुक्स, ओके, यू डोंट पे एनी ड्यूटी बिकॉज लाइक बुक्स आर बेसिकली नॉलेज. ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज पे जनरली टैक्स कम लगता है ना, ड्यूटीज कम लगती हैं. तो इन लोगों ने इस आर्ग्यूमेंट को बोरो कर लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इस चीज को एडवांस करने के लिए कि भाई टी के ऊपर हमें ड्यूटी नहीं देनी पड़े. अगर हम एक कंट्री से, ऑब्वियसली how do you think Britishers were getting tea? They were importing it, right? Okay, importing it from India or maybe importing it from China or whatever. They don't have to pay duty. Okay, so free trade उनको मिल गया ये कह के कि भाई ये तो एक बहुत अच्छी चीज है. ओके, क्योंकि लोगों में ड्रिंकिंग वगैरह की हैबिट कम होगी. ओके, सो फ्री ट्रेड गाइस, दिस रिमेंबर दिस. ओके, सो फ्री ट्रेड मींस नो ड्यूटीज. फैक्ट्री ओनर्स ज्वाइंड इन कंपेल्ड बाय द कॉज ऑफ सोबर वर्कफोर्स. फैक्ट्री ओनर्स का क्या फायदा था? वर्कफोर्स सोबर है. सोबर का मतलब they are not drinking. That's good for industries, that's good for factories, right? While Christian missionaries discovered that tea would soothe any colonial encounter. See, colonial encounters are bad. Okay, people suffer under colonial enterprises, colonial encounters. So logically तो उसका कोई वैसे सेंस नहीं बनता कि आप टी पिला के लोगों को कैसे शांत कर दोगे. बट एक ऐसा बिलीफ है उन लोगों का था कि कॉलोनियल एनकाउंटर्स में जो जिन लोगों को, नेटिव्स को हम लोग अपनी कॉलोनी में कंट्रोल करना चाह रहे हैं, टी कुड हेल्प देम सूद. ओके, दैट मीन्स काम डाउन. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, टी सर्विस वर प्रेजेंटेड एज अ सोशल एंड पेट्रियोटिक ड्यूटी. ओके, जस्ट इमेजिन गाइस, दे वर सेलिंग इट टी एज अ पेट्रियोटिक ड्यूटी. ठीक है, सोशल एंड पेट्रियोटिक ड्यूटी दैट अपलिफ्टेड सोल्जर्स एंड calmed refugees. So now you can just imagine the sort of marketing that you can do. Okay, so now you are also telling people that having tea is patriotic or it's social, and the reason being that it uplifts soldiers and it calms refugees. Okay, so I think you can see the sort of marketing that is going in the background. Okay, how people are able to sell tea not as a commodity but as a moral good. Okay, but it was tea's consumer-directed marketing by importers and retailers and later by brands that most closely portends current trade debates. An early version of farm-to-table movement was sparked by the anti-Chinese sentiment and concerns over trade deficit, as well as the reality and threat of adulterated tea containing dirt and hedge clippings. Lipton was soon advertised as from the garden to teacup, supply chains originating in British India and supervised by educated Englishmen. Okay, very important point, guys. देखो, बहुत बार क्या होता है कि जहां से कोई चीज इंपोर्ट हो रही होती है उस जगह की क्वालिटी पे हमें कंसर्न होता है. ठीक है, सो पीपल हैड कंसर्न रिगार्डिंग चाइनीज टी बिकॉज उसमें डर्ट बहुत होती थी, गंदी होती होगी, क्लिपिंग्स होती होंगी उसमें, हेज क्लिपिंग्स. एंड इन ऑर्डर टू basically use it as a tactic for marketing your English tea, okay, which is Lipton. Lipton happens to be one of the British India brands. Okay, so these people, they said that in our case our tea is not the Chinese tea. Okay, we are supervising the gardens. ठीक है, तो from farm to table का देखो इसमें मैसेज समझ रहे हो कि हम पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल कर रहे हैं. जहां से टी उगती है और जहां तक आपके यहाँ पहुंचती है, वी आर एंश्योरिंग दैट यू आर गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी. ओके, सो अगेन गाइस, हाउ यू कैन मार्केट द आइडिया like and like impress people by saying that okay, this is one of our USPs. Okay, this is farm to table. Okay, so Lipton used that strategy, right? While tea marketing was always presented direct consumer benefits, health, energy and relaxation. So tea marketing में ये तीनों benefits आपको सेल किए जाते थे. टी ड्रिंकर्स आर ऑल्सो assured that they were participating in larger noble project that advance the cause of family, nation and civilization. So टी पीने वालों को ये बताया जाता था कि आप सिर्फ टी नहीं पी रहे, ठीक है, आप एक नोबल काम कर रहे हो, आप एक बिगर पर्पस में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो अपना. ओके, सो लाइक पीपल वर मोर मोटिवेटेड टू हैव टी.
instead of alcohol, obviously. Okay, because that was maybe the sort of trend then. Rappaport's treatment of a subject is refreshingly apolitical. Indeed, it is a virtue that readers will be unable to guess her political orientation. Both the miracle of market and capitalism's dark underbelly are evident in T's complex story, as are the complicated effects of British colonialism. सिंपल लैंग्वेज में एज अ रीडर आप गेस नहीं कर सकते कि the treatment given to T by Rappaport had a political orientation or not. Okay, this story of T also gives you some sense of how markets and capitalism operates and like the sort of dark underbelly. मतलब किस तरीके से कैपिटलिज्म की जो कह सकते हो आप ऐसी चीजें जिसको कहते हैं ना लाइक some those things that are not evident to the public but they happen in secrecy. Okay, the dark underbelly of capitalism is also something that you can understand through this story of T and the complicated effects of British colonialism. Commodity histories are now themselves commodities. Recent work investigated cotton, salt, cod, sugar, chocolate, paper, and milk. And morality marketing is now a commodity as well. Okay, now guys, this is something important and it's a new idea. Morality market is now a commodity as well. सिंपल लैंग्वेज में अब मोरालिटी मार्केट इतनी कॉमन हो गई है कि वो भी कमोडिटी बन गई है. मतलब हर चीज को मोरालिटी के सेंस में बेचा जा रहा है. अगर आप ये काम करोगे तो ये बहुत मॉरल काम है, ठीक है ना. क्योंकि ये कह के अगर आप किसी को कोई चीज सेल करते हो, देयर वुड ऑलवेज बी सम पीपल हु वुड बी इम्प्रेस्ड कि इस चीज को खरीद के शायद हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं. ओके, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स वुड बी लेट्स से you advertising a product with made in India tag. Okay, so the moment you say okay, made in India, okay, like people feel okay, so this is something good. This is what I'm doing when I'm buying, let's say, a cell phone made in India. It also has a moral implication. Okay, people feel pride in that, right? So that's morality marketing, and morality marketing is now a commodity as well, applied to food, fair trade, apparel, and ecotourism. Yet T, Rappaport makes clear a world apart, an astonishing success story in which tea marketers not only succeeded in conveying a sense of moral elevation to the consumer, but also arguably did advance the cause of civilization and community. Guys, this is telling me something very important about tea story and how this person Rappaport is looking at the whole idea. देखो वो कह रहा है कि टी की मार्केटिंग हुई इस तरीके से कि this is tea is something that advances the cause of civilization and community. It's a social drink, it's a virtue, whatever. But author यहाँ पे कह रहा है कि भाई it's different from the other morality products in the sense that it did advance the cause of civilization and community, which means author believes that tea did play a positive role when it comes to civilization and community. ये author का bias यहाँ पे show कर रहा है कि ऑथर को लगता है कि हाँ टी रियली में उस लेवल का उसका एक इम्पैक्ट था. ठीक है. आई बीन ऑफर्ड टी एट ब्रिटिश गार्डन पार्टी, बेडोइन कैंपफायर, टर्किश कार्पेट शॉप एंड अ जापानीज चेस टिश्यू टू नेम अ फ्यू सेटिंग्स. इन ईच द ऑफरिंग वाज मोर ऑफ एन आइडिया ऑफ फ्रेंडशिप, कम्युनिटी रिस्पेक्ट देन अ ड्रिंक, एंड द केस in each case the idea then created a reality. Okay, so you can see author's bias in here कि author को भी खुद को फील होता है कि टी इन सारे वर्च्यूज को रिप्रेजेंट करती है, फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, रिस्पेक्ट, एंड दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ टी एंड दिस आल्सो बिकम्स द रियलिटी, राइट. It's not a stretch to say that tea marketers have advanced the particular noble cause of human dialogue and friendship. So author के हिसाब से actually टी ने ये सारे चीजों को एडवांस किया है. So author himself looks very positive about the idea of tea. Okay, let's look at the questions. The author of the book is least likely to support the view that, ठीक है. Out of the 4 options, guys, 3 options are already mentioned in the passage. एक option आपको passage में mentioned नहीं है. Okay, and see, अगर आपने first reading अच्छी तरीके से की है ना, for this question you don't need a second look. That is the power of reading the passage properly in the first reading itself. मैं हमेशा कहता हूँ, आप जब first reading कर रहे हो ना, be 100% focused. एक एक पैराग्राफ को मेंटली समराइज करो और लॉजिकली स्टोरी की तरह पूरी चीज को कनेक्ट करो. ठीक है. इफ यू आर एबल टू डू इट, आउट ऑफ दोस 4 क्वेश्चंस एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस वुड बी डन even without a second reference. Yes, you will require reference in some questions, but that gives you a lot of advantage. Plus paragraphs आपको पता रहते हैं. ठीक है.
कौन सा ऑप्शन है जो ऑथर ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया? ऑप्शंस: tea drinking was sometimes promoted as a patriotic duty. Yes, it was given. The ritual of tea promotes congeniality and camaraderie. Okay, which is sense of brotherhood, socialization. ठीक है, एक दूसरे के साथ लोगों का कनेक्शन. ठीक है, तो ये भी चीज हमें दे रखी है ना. लाइक it promoted the idea of civilization, socializing. People were like, they became friends over tea. It's given. Tea drinking has become a social ritual worldwide. तो ये तो पूरे पैसेज में ही मेंशन्ड है. यही हमारा मुद्दा भी है कि how tea became a social drink throughout the world. Fourth option: tea became the leading drink in Britain in the 19th century, guys. Leading drink. देखो, मुझे ये पता है कि टी वॉज प्रमोटेड एज अ सोशल ड्रिंक, टी वॉज प्रमोटेड एज अ पेट्रियोटिक ड्यूटी एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मोरालिटी, मार्केटिंग वगैरह. पैसेज में कहीं पे भी ये नहीं आया कि टी नंबर 1 ड्रिंक बन गई. देखो, मैं बोल भी नहीं सकता. जस्ट इमेजिन दिस गाइस, लीडिंग ड्रिंक का मतलब सब पीछे रह गए, ये आगे चल रहा है. ठीक है, क्या पैसेज के बेसिस में मैं बता सकता हूँ कि भाई जो अल्कोहल है, जो बाकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, उनके कंपैरिजन में भी टी आगे निकल गई? इज इट लाइक, कैन आई रियली मेक अ स्टेटमेंट एज टू लाइक इट वाज लीडिंग? आई डोंट नो. ठीक है, आई डोंट नो. आई कैन नॉट टेक एनी कॉल ऑन दिस. टी वर्सेस अदर ड्रिंक्स कुड बी एनीथिंग. Okay, how can I say that it was a leading drink? No information is available. This is the one that is the odd one out. ठीक है, this is the one that is least likely to be supported. Fourth option. This book review argues that according to Rappaport, tea is unlike any morality product because it. देखो, according to the author, tea बाकी morality product से थोड़ा अलग है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे उस पैराग्राफ को टारगेट करना है जहां पे टी को मैंने एज अ मोरालिटी प्रोडक्ट कंसिडर किया है, लेकिन मैंने वो डिस्टिंक्शन भी बताया कि टी बाकी मोरालिटी प्रोडक्ट से क्यों अलग है. सो लेट मी टेक यू टू द पैराग्राफ. ओके, नाउ आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी रिमेंबर, क्योंकि हम लोगों ने इस पैराग्राफ को टारगेट किया था. सो देखो, लुक एट दिस गाइस. येट टी इज, एज Rappaport makes clear, a world apart. वर्ल्ड अपार्ट का मतलब बाकी ड्रिंक से अलग है. कैसे? An astonishing success story in which tea marketers not only succeeded in conveying a sense of moral elevation to the consumer, but also arguably did advance the cause of civilization and community. Okay, so let me explain this. According to this person, Rappaport, how is tea different from other morality drinks? Because he makes it clear कि it's a world apart. कैसे वर्ल्ड अपार्ट? इस तरीके से वर्ल्ड अपार्ट की टी ने एक तरफ मॉरल एलिवेशन का सेंस तो कंज्यूमर को दिया ही कि टी को कंज्यूम करके आप मॉरली कुछ अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन साथ में इट आर्गुएबली डिड एडवांस द कॉज. तो ऑथर को लगता है कि टी इस हिसाब से डिफरेंट है कि टी ने एक्चुअली भी सिविलाइजेशन और कम्युनिटी के एजेंडा को एडवांस किया. मतलब टी की मार्केटिंग भी ऐसे ही हुई कि ये मोरालिटी प्रोडक्ट है, और कहीं ना कहीं पे ऑथर को लगता है कि डिफरेंस ये है कि ये टी जो है ये सिर्फ कहने के लिए मोरालिटी प्रोडक्ट नहीं थी, इसने मॉरल पर्पस को, सिविलाइजेशन को, कम्युनिटी को सर्व भी किया. दैट वाज द डिफरेंस. ओके, बिकॉज यू कैन सी ये जो पैराग्राफ है, इफ यू एक्चुअली गो थ्रू इट, ही इज मेकिंग इट क्लियर दैट व्हाट मोरालिटी मार्केटिंग इज एंड हाउ टी इज डिफरेंट in the sense of morality marketing. Okay, and obviously now it makes sense. It is different because it did advance the cause. Okay, so T ने जो claim किया वो उसने achieve भी किया, वो उसका difference था. Coming to the question, appeal to the universal group and not just to the niche section of people. Okay, niche और universal की तो हमें नहीं लगता बात हुई वहां पे. Had an actual beneficial effect on social interaction and community in general. This is a good option. इसलिए डिफरेंट है क्योंकि टी का एक्चुअली बेनिफिट हुआ सोशली और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में. वाज एक्टिवली एनकरेज बाय इंटरेस्ट ग्रुप्स की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही. वाज मार्केटिंग बाय अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप. अगेन गाइस, यू कैन गो by elimination also. You can see that the difference that is being mentioned is in context of the fact that it actually did a good job, right? Very easily second option.
Third question. According to the book A Thirst for Empire says that in addition to profit motivated marketing, tea drinking was promoted in Britain by all of the following except. So guys, 4 options हैं. 4 options में से 3 options टी को प्रमोट करने के लिए एजेंडा का पार्ट होंगे, एक ऑप्शन उस एजेंडा का पार्ट नहीं है. Factories wanted to instill sobriety in their labor. Was that given? Absolutely it was given. Tea drinkers lobbying for product diversity. क्या पूरे पैसेज में कहीं इस चीज की बात हुई कि टी को पॉपुलराइज करने के पीछे एक रीजन ये भी था कि जो टी पीने वाले हैं उनको टी के अंदर वैरायटीज चाहिए. प्रोडक्ट डाइवर्सिटी क्या है? प्रोडक्ट डाइवर्सिटी मींस यू वांट वैरायटीज. ओके, यू वांट अ डाइवर्स प्रोडक्ट. ओके, फॉर एग्जांपल यू वांट ब्लैक टी, यू वांट व्हाइट टी, ओलोंग टी, ग्रीन टी. देयर आर मल्टीपल वैरायटीज ऑफ ट्री. सो वी डोंट थिंक कि ऐसा कोई ऑप्शन आया है कि टी ड्रिंकर्स ने बोला कि हमें ज्यादा डाइवर्सिटी चाहिए और उसके लिए लॉबी किया, इसकी वजह से जो टी ड्रिंकिंग है वो प्रमोट हुई. प्रोडक्ट डाइवर्सिटी वाला एंगल तो आई डोंट थिंक पूरे पैसेज में कहीं आया है. ठीक है. मैन्युफैक्चरर्स हु आर प्रेसिंग फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, यस ये मेंशन था आपका, है ना. ठीक है, फर्स्ट स्लाइड के अंदर यू कैन सी दे वर सेइंग दैट इट वाज द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड, राइट. ओके, दे वर टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड गाइस. ये रहा. ठीक है. सोबर वर्कफोर्स यू कैन सी सेकंड पैराग्राफ में यू हैव द सोबर वर्कफोर्स. यू आल्सो हैव द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड. ये रहा. ठीक है. फ्री ट्रेड इन टी. फ्री ट्रेड क्या है? दे डोंट वांट टू पे द ड्यूटी. ठीक है. आप अगर ये क्लेम कर दो कि टी तो एक बहुत बड़ा मॉरल प्रोडक्ट है तो गवर्नमेंट्स आपको ड्यूटी नहीं चार्ज करेंगी, है ना. दे लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इट बिकेम ड्यूटी फ्री. ठीक है. आप इंपोर्ट कर सकते हो मे बी बिना ड्यूटी दिए. ओके, कमिंग बैक. Okay, duty free imports. Anti-alcohol lobby as substitute for consumption of liquor. Yes, it was given. Which one is the odd one out? Second option. Very easily. Last one. Today, conflating consumption with virtue can be seen in the marketing of. See, conflating means confusing. कैसे कंज्यूमर को आप इस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट करते हो कि उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन आप किसी अच्छी आदत से जोड़ देते हो, कि कोई अच्छा डीड आप कर रहे हो उससे जोड़ देते हो. वर्च्यू क्या है? वर्च्यू इज समथिंग दैट इज लाइक वेयर यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर पीपल और गुड फॉर द वर्ल्ड और गुड फॉर द कंट्री. ओके, राइट. व्हिच इज द ऑप्शन दैट could be used by the marketers to confuse people by saying that okay, this is a virtue. Let's look at the options. Sustainably farmed products looks like a good choice. Why? देखो, what is sustainability? Sustainability means you extracting resources in such a manner that you are not diluting the resources for the upcoming generation. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे let's talk about fuels. So you have natural gas, you have solar energy. Okay, then you also have things like wind energy. Okay, ये सारी चीजें क्या हैं? They are more sustainable. Why? Because you cannot exhaust them. On the other hand, if you look at things like fossil fuels, okay, they are for the short term. You can exhaust them. ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे. पॉल्यूशन भी होता है. Okay, और आप फ्यूचर जनरेशंस को आप नुकसान करोगे. सिमिलरली अगर मैं सस्टेनेबली फार्म प्रोडक्ट्स की बात करता हूं, मोस्टली इन द कंटेक्स्ट ऑफ सी फूड. ठीक है. सी फूड में आई थिंक ये वर्ड आपने सुना होगा, व्हेन यू एक्सट्रैक्ट और व्हेन यू लाइक फिश, बट यू आर डूइंग फिशिंग इन सच अ मैनर दैट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ फिश, and you're also ensuring that there is enough food for the upcoming generations. So that is sustainability. कोई भी चीज जो sustainable होगी ना guys, understand this, any product that is selling itself with the idea of sustainability implies that they want to get this message across to the audience that see, we are doing we are farming this product. Okay, it could be anything. It could be seafood. It could literally be some food product. In such a manner that we are not harming the environment. We are not compromising the future generations. Okay, we are doing it in the best possible manner. And जितना हम लोग extract कर रहे हैं nature से, हम उतना शायद compensate भी कर रहे हैं. Okay, I don't know like how many of you have heard of this term. Okay, but anyone who has heard of this term,
realizes that sustainable farm products, okay, basically is a morality marketing, जहाँ पे आप लोगों को ये बताते हो कि हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से हर चीज को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है. वी आर नॉट हार्मिंग एनीवन. ओके ओके. नाउ दैट्स अ वन गुड ऑप्शन दैट कुड फिट इन दिस कंटेक्स्ट, क्योंकि कंजम्पशन और वर्च्यू को आप मिला के लोगों को मार्केट करना चाह रहे हो. अर्गोनॉमिकली डिजाइन प्रोडक्ट्स, ओके, डिजाइनिंग का वर्च्यू से क्या लेना देना. ट्रैवल टू प्रिस्टीन डेस्टिनेशंस, you're traveling to perfect destination, so what guys, यहाँ कौन सी morality आएगी. नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स, देखो हेल्थ सप्लीमेंट्स आपके फायदे के लिए होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो अननेचुरल हो. द पॉइंट इज health supplements are health supplements, right? There's no virtue in that. You're just benefiting yourself. You can take it, there's nothing wrong in that, but the point is that there is no virtue. There is no bigger purpose served. The only option that talks about you serving a bigger purpose by using that product is sustainable farming. Okay, because यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप इस आइडिया को एम्ब्रेस कर रहे हो कि हमारे काम करने की वजह से नेचर को नुकसान नहीं हो रहा. ठीक है. So this is the answer, first option. Okay, so what's my take on this passage? If you are someone who is well prepared, if you are someone who is focused, okay, I think this is a sort of passage that where you can even get all 4 questions right. Okay, very doable, very interesting passage. Okay, before we wind up guys, this is the 2025 batch. Do check out this batch. आप में से जो बच्चे 2025 के लिए prepare कर रहे हैं, okay, you can have a look at this batch. Okay, and you can always call on the office numbers for further details. I'm going to see you in the next session. That's it for today. Bye bye.